Every year, thousands of students prepare for RBI exam, and every year, RBI somehow gives us some or the other bouncers, and these bouncers are so difficult to tackle that we end up wasting our entire year and destroying that entire year in our preparation. So, what exactly do we do about this problem wherein RBI tends to ask us questions which are not predictable enough or from areas which are not predictable enough? In order to understand that, it's important to understand how RBI examinations has evolved over time and what are the out of syllabus, so-called out of syllabus questions that it has been asking or out of syllabus areas that it has been touching. In order to do that, we need to understand the past. We need to understand how RBI examination and paper has evolved in the last 2-3 years. And when we do that, we automatically understand, okay, these are the predictable areas from where it can ask questions in the future also. Or these are the areas that are more important now, and I need to be concerned about these areas as well. I cannot keep watching videos that were created in 2020, 2019, 2017. Please make sure that you're watching recent videos on YouTube as well, because otherwise you end up preparing what was relevant in the last 5 years but not today, right? So let's do that analysis. I want to do that analysis today, help you understand if there is anything out of syllabus that is being asked by Reserve Bank of India examination, grade B examination or not. And if there is anything out of syllabus, how do we cover that? How do we tackle that? Because we cannot complain and say कि ये तो out of syllabus है, मत पूछो. They can ask anything under the sun as far as it is relevant for your examination and it comes under your overall subject. तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर अगर टॉपिक नहीं भी दिया है तो भी वो पूछ सकते हैं. That is what has been happening. Therefore, we need to be prepared. Okay, start करते हैं धीरे धीरे एक एक करके. फेज 1 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फेज 1 में अगर हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये 4 सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है, इनको उठाएं. क्वांट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इवोल्यूशन हुआ है पिछले 3 से 4 साल में. आई डोंट वांट टू मेक दिस सेशन बोरिंग एंड वेरी लॉन्ग बाय giving you examples, giving you actual questions which were asked in the past 2-3 years, but I'm going to discuss with you the gist only. Number 1, the level has gone up. ये बहुत outrightly देखा गया है पिछले 3-4 साल में, and one of the major reasons of that the level has gone up is also because chapters have changed. पहले जैसे mensuration नहीं आया करता था, P&C probability बिल्कुल नहीं आया करता था. अब उनके एक एक क्वेश्चन भी डाल दिए तो ऑटोमेटिकली पेपर आपको डिफिकल्ट लगेगा. And at the same time, they've also started making connections that did not exist before. जैसे कि उन्होंने टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया. So those are the changes that they are making. Now, it doesn't mean that it is strictly out of syllabus. Out of syllabus फिर वो नहीं रहा because it is a part of quantitative aptitude, but उसका लेवल उस वजह से बढ़ गया है. And this evolution is not happening only in RBI exam. ये आपको UPSC, CSAT में भी दिखा है evolution. यही कैट में भी इवोल्यूशन दिखा है. तो जब सब जगह इवोल्यूशन ये हो रहा है, it is bound to happen here as well. And I think it's smart and it's proactive on the part of RBI exam body that they're making these changes. The challenge for us is now कि हम ये evolution को ध्यान में लेके चलें. We adapt to this evolution, to this change, and we make sure that when we are studying, when we are preparing, we are keeping this in mind. Okay, we are preparing according to the need of the examination now. We are not 3 years, 4 years back, or we are not behind the examination demand by 3-4 years. Okay, that is about quant. Reasoning में puzzles पहले भी 20 से 25 नंबर के आया करते थे, अब भी उतना ही आते हैं. बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है puzzles को अगर हम ले तो. Verbal reasoning में काफ़ी डिफरेंस आया है. The level of verbal reasoning has gone up. So although English paper is easy as easy as it used to be, but in reasoning a major portion of reasoning is critical and verbal reasoning. उसका level काफी ऊपर गया है. And the change, the most prominent change that they've made in both these, in English as well as verbal reasoning, is length of the questions. The difficulty level of questions has not increased by a big margin, but the length of the questions has increased by a big margin. क्वेश्चन बहुत लंबे हो गए हैं, पैराग्राफ्स बहुत लंबे हो गए हैं, एंड व्हेन दैट लेंथ इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज
नाउ यू नो द सेम क्वेश्चन इज गोइंग टू प्रॉब्ली टेक 3-4 minutes टू आंसर. पहले वो 1 minute में हो जाता था. प्रेशर बढ़ गया आपके ऊपर कि नहीं हुआ तो क्या होगा. यू स्टार्ट थिंकिंग ऑल दीज. नाउ द गुड थिंग इज दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड कैन बी prepared in advance. You can prepare yourself, practice yourself, train yourself to deal with such high length or more heavy length questions. But level बहुत ज़्यादा different नहीं हुआ है. That is a good thing. So there is nothing out of syllabus here. Quant में we can say out of syllabus because now they've started combining 2-3 topics and make it one question, जो कि आपको books में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तो challenge हो जाता है. Okay. So the more you practice, the more different kinds of questions you practice, the more you get versatile to deal with such new kinds of questions. जर्नल अवेयरनेस, बहुत बड़ा चेंज आया जर्नल अवेयरनेस में. जब एग्जाम मुझे याद है 2019-2018 की बात है, when I used to guide students to prepare for this exam, students used to complain, sir, why are they asking these unnecessary facts, why are they asking such factual questions that are not relevant for RBI as an organization at all, for us to be working in RBI at all or any organization. And I was like, yes, you are correct, but what's the point of questioning the organization when you know that they're not going to listen? And that was the end of that conversation. Now they probably actually listen to us and they have changed the pattern of general awareness in the past 2 years. What have they done? Number one, now simple facts are being asked less. पहले बहुत simple straightforward facts पूछा करते थे कि नेशनल अवार्ड किसने जीता इस साल, नेशनल अवार्ड जिसने जीता कौन सी मूवी के लिए जीता, सिनेमा की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने अवार्ड के फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनी थी या कौन सा सूट पहना था. दे यूज्ड टू आस्क ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. दे स्टिल डू आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इट्स नॉट कंप्लीटली जीरो, बट द नंबर हैज रिड्यूस्ड. पहले 80 में से अगर 60 क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल हुआ करते थे, नाउ आउट ऑफ 80 ओनली 20-25 क्वेश्चंस आर सच. द रिमेनिंग क्वेश्चंस have become very complicated, difficult and complex now. तो अब हम दो टाइप के नए इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं. नंबर वन, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. तो फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी भी हैं, बट दीज आर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम RBI 247 एंड PIB 247. ये दो मैगजीन्स हैं जहां से कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इनकी तैयारी करना बहुत जरूरी है. इसके लिए दोनों मैगजीन्स रेगुलरली पढ़ना इंपॉर्टेंट है. एंड द सेकेंड इज कॉन्सेप्चुअल फाइनेंशियल अवेयरनेस. जो है मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो भी हम पढ़ाते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम RBI वेबसाइट और फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, नाउ दोज आर आल्सो बीइंग आस्क्ड एंड समटाइम्स दे आर आल्सो बीइंग कंबाइंड कि एक ही क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, कुछ फैक्ट्स दे दिए, वो भी पूछ लिया. दे कैन आस्क बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एज वेल. तो ये जर्नल अवेयरनेस में सबसे बड़ा इवोल्यूशन है. नाउ दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस पर से, but this is a change in the way they are asking questions and the kinds of questions themselves that they are asking. So the weightage has changed. Out of these 60-80 questions, you will find 20-25 questions which are purely factual directly from Spotlight. You will find 40 plus questions from RBI 247. You will find around 20 questions from PIB and government schemes combined. That is how they've evolved and they've changed the pattern of asking questions. पहले गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा करते थे बहुत ज़्यादा, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू कंप्लेन कि सर ये तो UPSC वाले एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते हैं. नाउ दैट fortunately now that excuse does not exist anymore. So if you are good, because financial awareness is not taught to and not studied by civil services aspirants, तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो there are high chances that you will do well in phase 1 general awareness. Let's come to phase 2 now. How has the exam changed और कुछ out of syllabus आ रहा है या नहीं आ रहा है. सबसे पहले अगर हम फाइनेंस की बात करें, in answer writing we are witnessing a big evolution. We are seeing that in answer writing, which means the finance descriptive paper that is there in the examination, there are very complex, specific and current affairs based answer writing questions that are being asked. मेरे पीछे शायद एक किताब रखी है, that is the past year paper analysis of RBI phase 1 as well as phase 2. They're there on Amazon. Please do purchase those, please do use those books, because उससे आपको समझ आएगा, वहाँ पे ये सब दिया हुआ है कि किस तरह के फैक्चुअल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं फाइनेंस के अंदर. दिस इज अ बिग इवोल्यूशन एंड ऑल्दो दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, द सैड पार्ट हियर इज दैट नॉट इनफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ फाइनेंस, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं और जो आई थिंक चेक करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली
these students, you students are going to be working in the financial and banking sector. तो CFA लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल, वो पूछे नहीं जा रहे हैं. इंस्टेड दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, विच इज a decent trend. Certainly it's a better option than asking a lot of government schemes and PIB related questions, because वहाँ पे civil services aspirants को काफ़ी advantage मिलता है. But it can be better. But this year and last year we saw this evolution. Lot of questions, especially in finance, answer writing coming from current affairs, and that is expected to continue at least for the next 1 or 2 years. मैनेजमेंट में क्या चेंजेस देखे गए हैं? केस स्टडीज में सबसे बड़ा चेंज है नंबर 1, और एक और चेंज देखा गया है मैनेजमेंट में जिसकी मैं बात करूंगा, विच इज इन मैनेजमेंट में अगर हम बात करें सिलेबस की, राइट. ओके, तो अगर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडीज. दिस ईयर वी सॉ अ बिग चेंज इन मैनेजमेंट, मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी requiring case studies were asked in management. This was one of the biggest changes in management that we saw this year, कि ऐसी केस स्टडीज पूछी गई जहां पे खाली कीवर्ड से, खाली क्वेश्चन के केस को पढ़ के आंसर करने का ट्राई करने से नहीं होगा. It was more application based. 2 or more options were so close that they were almost correct. So it was becoming very difficult for students to answer questions. But at those moments they were checking your conceptual clarity. वो बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे. That is a big change in case studies. Second change is something that we witnessed somewhere around 2017-18 as well, and we witnessing it again, कि मैनेजमेंट में सिलेबस जो दिया हुआ है उसके बाहर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 17-18 के आसपास हमने ये देखा था that they were asking questions from outside the syllabus, especially in management. Then we saw that not happening for the next 3-4 years. But this year in 2024, we saw that again. There were questions from topics that are strictly not a part of management syllabus. Fortunately, मैंने कोर्स में वो पढ़ाए हुए थे. Unfortunately, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है यार पहले सिलेबस का पढ़ेंगे फिर देखेंगे. अब जब वो फिर आ जाता है, when there is we will do it later, then you will never do it. That is how it works. So I would recommend कि मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे हो सिलेबस, stick with the syllabus to cover it once, but after that cover everything that you have in those books that I have recommended on YouTube itself. Okay, because वहां से questions आ रहे हैं. When we come to economic and social issues, so this is the only area जहां पे directly we can say out of syllabus 1, 2, 3 questions पूछे जा रहे हैं. Economic and social issues में क्या change आया है? Deep current affairs knowledge has been asked now, especially the PDFs which are given on different ministry websites, and different pages, different information that is provided on the websites itself, and the PDFs or documents that are available on these websites. तो जो भी ministries, departments release करते हैं documents, PDFs, वहाँ से questions उठाए जा रहे हैं, and they are actually very deep questions. तो वहाँ पे deep current affairs knowledge आपकी, which also becomes factual at a lot of times, that is being tested. That is an evolution that we are seeing. Answer writing, just like finance, I am witnessing this change that a lot of current affairs based answer writing questions are being asked in the examination. तो उसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान में रखिए. जिस तरह से पहले सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स बजट से क्वेश्चंस आते थे वैसे भी आ रहे हैं, बट द नंबर हैज गॉन डाउन एंड द नंबर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स आंसर राइटिंग क्वेश्चंस इज इंक्रीजिंग. करंट अफेयर्स में यहाँ पे सबसे मेजर चेंज जो देखा गया है वो रिपोर्ट्स में देखा गया है. Now we are seeing a lot of questions from reports, especially in answer writing part of ESI. That was not a trend before. Now reports are nowhere mentioned in the syllabus. Directly कहीं mentioned नहीं है reports. बस उन्होंने ये mention कर दिया है अपने list of important sources में that all the international major bodies which releases their reports should be studied. इस तरह से कुछ wording किया हुआ है. डायरेक्टली ये मेंशन नहीं है कि ये रिपोर्ट पूछी जाएगी या ये ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आपने पूछी जाएंगी. दैट इज नॉट मेंशन, बट बिकॉज इट इज करंट अफेयर्स, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन, एंड नाउ दे हैव started following very dedicatedly reports. So I would request all the students कि reports प्लीज ढंग से पढ़िए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा where I will discuss an entire list of all the reports from finance and economic and social issues
that are going to be relevant for this year's examination. ठीक है ना? इंग्लिश राइटिंग में व्हाट इज द इवोल्यूशन और व्हाट इज द चेंज, अवेयरनेस एंड नॉलेज बेस, ये दो चीजें वो काफी चेक कर रहे हैं इंग्लिश राइटिंग में, जो पहले नहीं होता था. पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे, एस्से स्पेशली. नाउ दे हैव चेंज्ड इन द पास्ट 2-3 years where they are also checking your awareness. तो मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन बना के देंगे, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंट सोसाइटी में जो चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, उनसे रिलेटेड बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बना के देते हैं. वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग पे क्वेश्चन आया था आई थिंक इंग्लिश में दिस ईयर, वंडरफुल क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चंस वो बना रहे हैं वेयर दे आर चेकिंग योर अवेयरनेस एंड नॉट जस्ट हाउ मच पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव रेड. तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर रेगुलरली थोड़ा देखते रहोगे तो आपकी अवेयरनेस अच्छी रहेगी. तो नॉलेज बेस यहाँ पे आपका काफी अच्छे से चेक हो जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल द चेंजेस दैट आर देयर और इवोल्यूशंस दैट हैव हैपेंड इन phase 1 and phase 2. If we talk about the interview, then how has RBI interview panel and their way of asking questions evolved over time? These are the 4 major areas that according to me they are checking. There might be more, it's not an exhaustive list. This based upon the feedback of students, but मुझे ये दिखता है कि ये 4 areas वो आजकल चेक कर रहे हैं. Number 1, they are checking your personality, जिसके अंदर confidence, honesty, rationality, ऐसे कुछ points वो देख रहे हैं. And because they are also taking your एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेते हैं वो, तो वो दे combine these two and try and see whether you are consistent and honest throughout the process or not. So this becomes a very important part of your interview process. अगर यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, if they feel that you're not honest, you mentioned something else in psychometric test, you're saying something completely opposite now, they're never going to give you good marks. So this becomes a very important aspect. Keep developing upon your personality. For that, you need to discuss, number 1, with other people, whatever you're doing, whatever is going on in your mind, whatever you're reading. इसीलिए मैंने वीकली सेशन स्टार्ट किए थे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि मैं 2 घंटे दूं कि भाई आप बोलो और मैं सुन रहा हूं. दैट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, इट boosts your confidence and gives you that belief that you can do it and you're going in the right direction and what you're thinking is correct, it's not incorrect. वो सब आपको confidence देता है. Number 2, if you're not already enrolled in some master's program, higher studies, and you're not working also, I would recommend कि कुछ ना कुछ higher studies भाई साथ में चलाओ. Do not destroy and put your life on hold like this for an examination. Higher studies साथ में करते रहो, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है. नहीं तो पर्सनैलिटी इमीडिएटली 0 पे आ जाती है, 1-2 साल में ही आपकी पर्सनैलिटी नीचे आ जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे चेकिंग इन इंटरव्यू. नंबर 1, पर्सनैलिटी. नंबर 2, प्रोफाइल नॉलेज एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को बड़ा सीरियसली लेते हैं वो, बिकॉज दे वांट यू टू टेक योर जॉब सीरियसली. दे वांट टू सी वेदर यू टेक योर जॉब सीरियसली और नॉट. तो जो बैंकर्स हैं स्पेशली वो यहाँ पे सफर करते हैं, क्योंकि बैंकर्स जब बैंक में होते हैं तो उनको लगता है यार किसी तरह यहाँ से बाहर निकलें. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू में अल्टीमेटली ये वापस आएगा. दिस घोस्ट इज गोइंग टू कम बैक एंड बाइट यू. सो व्हाई नॉट टेक योर बैंकिंग जॉब सीरियसली एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर. हो सकता है प्रिपरेशन में 1 साल की जगह 2 साल लग जाएं, वो चलेगा, लेकिन बैंकिंग जॉब को सीरियसली लेना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में वो चेक होगा ही होगा. इसलिए आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को सीरियसली लेना जरूरी है, स्पेशली फॉर बैंकर्स. और प्रोफाइल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपने जो भी अपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा है, व्हाटएवर यू मेंशन्ड, यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दैट. ऐसा नहीं कि यार कुछ भी लिख दिया और वहां जाके फुस हो गया, वहां पे पटाखा फुस नहीं होना चाहिए. ओके, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. लिखने के लिए मत लिखिए, वो चेक कर रहे हैं. बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, इन तीनों की नॉलेज वो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कई बार चेक करते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम स्पेशली इकोनॉमी में होती है, बिकॉज ऊपर हमने सिलेबस में देखा phase 1 phase 2 में इकोनॉमी में सिलेबस में से ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, देयरफॉर स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर इट देयर. बट यहाँ पे कई बार वो फंस जाते हैं. रैंडमली उन्होंने, पैनल ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछ लिए, आप फंस गए. या or something is mentioned in your profile that takes them towards asking questions from economy from you, and then you get stuck. So make sure that you take these 3 areas seriously: banking, finance, economy. तीनों ही बड़े important हैं. And the last, and I think this is the most important according to me, according to my experience, this is the most important. कोई भी पैनलिस्ट आपके सामने बैठा है और आपसे सवाल पूछ रहा है, if they feel, even if you're not able to answer even one question correctly,
एक मूवी याद आती है, दैट मूवी वाज देयर, परसूट ऑफ हैप्पीनेस. इन इट द सेम थिंग हैपेंड. आई होप यू हैव सीन इट. उस मूवी में यही होता है, he has been preparing for that interview for some time, and they know that he can do it, and they also realize, the panelist realizes कि यार आज इसका खराब दिन है, it's a bad day for him, it doesn't matter, every human, every person has good and bad days. So if they get this vibe that you have come prepared, and even after that you're not able to answer questions, it does not necessarily mean that they're going to give you bad marks. They will give you decent marks if they feel कि यार लड़के ने एफर्ट मारा था, लड़की ने एफर्ट मारा था, यहाँ आके शायद कुछ गड़बड़ हो गई. इट्स ओके. Wrong things happen, mistakes do happen, blunders do take place. It's fine, we are all human. But if they feel that you've not come prepared, बस ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, सीरियस नहीं हो, तो फिर वो नंबर काटेंगे उसके. So it's very important to realize this, that the panelists understand that you might have a bad day, and they're not judging you based upon your answers. They're just trying to discuss with you and see how present minded you are, how comfortable you are talking with them, how serious you are in your preparation, that you've come prepared with a set of expected questions and answers. तो ऐसी चीजें समझना चाहते हैं. ठीक है ना? That's all from my side. I hope this video was useful. I hope you had some additional understanding as to what is it that we feel is out of syllabus being asked by RBI. I would not say completely out of syllabus, but कुछ evolution हुआ है एग्जाम में, उस evolution को समझना जरूरी है. That's all from my side. I'll see you again very soon. Till then, all the best. Bye bye. Jai Hind.